हाँ, this one is the example we were discussing about. Page number 144, sir. Show that the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle. In our लास्ट क्लास ऑल्सो, जब हमारी लास्ट क्लास थी ना, मैंने तुम्हें एक हिंट तो दिया था इस एग्जाम्पल के बारे में, बट सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, विल सी। हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम फर्स्ट। पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Okay, these two parallel lines I am taking, then okay, because this is the parallelogram I am having. Parallelogram, I'll name it later. Now I can name it A B C D, whatever you want. A, then this is B, this is C, and this is D. Okay, suppose this is the parallelogram we are having, A B C D. Now according to the question is saying that the bisectors of the angles. Now just see the question clearly. It is saying the bisectors of the angles. So if you will take the bisectors of the angles, now just we'll take for the angle A. If I am drawing its bisector, see, this is the bisector of angle A. It is dividing angle A in two parts, equal parts. Okay, similarly I am drawing for this angle D, bisector of angle D. Okay, then again I am drawing for this angle C, bisector of angle C, and same I am doing for this B also, bisector of angle B. Now you can clearly see we are having a figure in between. हमारे पास एक फिगर बन जाएगी बीच में. You can see this one I am talking about, this figure. We have to prove that this pink one that I am showing to you is a rectangle. This is what we need to prove. हाँ, I'll name it. मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ यहाँ पे P. Let's take it as P point. This one as Q. This one as R, and this one as S. Okay, so we have to prove that this PQRS is what? It is a rectangle. That is what we need to prove. ये हम लोगों को prove करना है. So first we will write this thing in given statement. What we can write in the given statement, that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. This is the given statement we are having. ABCD is a parallelogram. Then the second thing, Sir? Yes, am I audible? Sir, the names given in the figure and this you are drawn, sir, those names are different, sir. Yeah, we can take, see, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वहाँ पे कहीं फिगर नहीं मेंशन होगी. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द नेम वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि वहाँ पे जब तुम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन विल बी दैट मच ओनली, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. नाउ फिगर विल नॉट बी गिवन टू यू. वो लोग फिगर थोड़ी ना देंगे. दैट यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर ओन, खुद से ड्रॉ करना है. तो दैट मीन्स यू कैन टेक एनी नेम, है ना. यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट मीन्स सी फिगर इन द टेक्स्ट बुक. दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू ट्राई एंड सॉल्विंग. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गिवन. ABCD is a parallelogram. That is the thing we are given. Then we are given that all angle bisectors are also given. See this AS, then DQ, all are. See angle bisectors for all angles are also given, है ना, are also given to us. ये भी दिया हुआ है कि सारे एंगल्स जो हैं वो बाइसेक्टर हुए हैं, वो भी दिया है. नाउ दे आर फॉर्मिंग अ फिगर. वो बीच में एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. उसको हम लोगों को प्रूव करना है. एंड द फिगर वी आर हैविंग, दैट पिंक वन आई एम नेमिंग PQRS. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल. ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि PQRS एक रेक्टेंगल है, वो हम प्रूव करेंगे. सो लेट्स सी द फिगर. अब हम फिगर के ऊपर फिर से जाते हैं. सी वन थिंग, if this angle A is bisected by this line AS, that means can I write here that this angle 1 and this angle 2 are equal? Can I write this thing? Angle 1 and angle 2 are equal?
I can write because you know, Yes, sir. है ना, this AS is the bisector, so I can write that angle 1 and angle 2 are equal. Similarly, I can write that this angle 3 and this one angle 4, these angle are also equal. I can write this thing also. So when we are going to write the proof part, okay, we are writing for the proof part, that means in the proof part I can write that angle 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ओके, अब व्हाट रीजन यू आर गोइंग टू राइट, रीजन क्या लिखने वाले हो तुम इसके लिए? यू विल राइट दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर गिवन. यस, एंगल बाइसेक्टर्स फॉर which one? Angle A, angle you can write angle A and angle D, for both are given. ये दोनों चीजें हम लोगों को दी हुई हैं क्वेश्चन में. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल. ये चीजें मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे, तुम फिगर में ध्यान से देख सकते हो. देखो एंगल 1 और 2 को इक्वल लिखा है, 3 एंड 4 आई हैव रिटन इक्वल. सो दैट मीन्स व्हाट? नाउ जस्ट सी वन मोर थिंग. The sum of complete angle, if I am taking this one, I am taking this complete angle, angle A, means I can name it as angle DAB. देखो angle DAB and angle this one, angle ADC, this one, angle DAB and ADC, how much it will be? Angle DAB, 180 degrees, sir. yes, it will be 180. 180, sir. Adjacent angles. Yes, angle DAB plus angle ADC. The sum of these two angles I am taking equals to 180. Okay, equal to 180. Region you can write on your own. खुद से region लिख सकते हो. These are the adjacent angles of a parallelogram. तुम लोगों को अच्छे से पता है. If adjacent angle of parallelogram are there, the sum is 180. Okay, now if you will look for this angle DAB, देखो अगर एंगल DAB को ध्यान से देखोगे, it is formed by two angles, angle 1 and angle 2, है ना. It is the combination of two angles 1 and 2. So in place of angle DAB I can write angle 1 plus angle 2, and in place of angle ADC, now just see angle ADC, this one, angle 3 and angle 4 I can write angle 3 plus angle 4, that is what I can write in place of that angle. So it will be equal to how much? 180. Okay, that will be equal to 180. So now just look one thing, angle 1 and 2 are equal now. So if I want to take this inside triangle, I am talking about that triangle, this one, if I'll show you this one. Now if I want to take this triangle here, now just look, angle 1 and 2 are equal, angle 1 and 2 are equal now. So in place of 2 I will be mentioning angle 1, so I can write here 2 times angle 1. Okay, wait, 2 times angle 1, 2 times angle 1 plus, then in place of angle 4 if I write angle 3, देखो angle 4 की जगह पे angle 3, because they are equal, so it will be 2 times angle 3. I can write 2 times angle 3 and it will be equal to what? 180. Okay, now can you take 2 common from both these? See, 2 is there, 2 is there, so we can take these 2 common, so we will be left with what? Angle 1 plus angle 3 equals to what? Then 180 divided by 2. Why this 2 is in division? Because you can see this 2 is in multiplication with this angle 1 and 3, so we are taking it as common, so it will divide 180 and it will become how much? Angle 1 plus angle 3 will be 90 degree. Is it correct that angle 1 and angle 3 is 90 degree? It is correct now. So that means what? If angle 1 plus angle 3, if the sum of these two angles, angle 1 plus angle 3 is 90, can we say that this angle, if I am naming this as angle 5, angle 5 will also be 90? Angle 5. Why? Because you can see now, angle 5 is what? It is 180 minus angle 1 plus angle 3, angle 1 plus angle 3, ये हम लिख सकते हैं ना,
देखो ये जो हम एंगल 5 फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज व्हाट 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, है ना. वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. 1 प्लस 3 प्लस 5 इज हाउ मच 180. सो दैट मीन्स व्हाट angle 5 will be how much, it will be 90, because the sum of angle 1 plus angle 3, 1 or 3 का sum you can check here, it is 90, so it will be 90. And angle SPRQ will be also 96. Yes, now see if this angle 5 is 90, What that is the- means what, Yeah, this what is the angle angle? will also be 90. If I am naming it as angle 6, I will name it as angle 6, so angle 6 will be equal to 90. Angle 6 will also be 90, है ना. And one more thing before that thing, see if we are taking angle this one angle 5, if we are taking this angle 5 as 90 by using the angle sum property, same thing can happen with angle Q also. इसके साथ भी तो same आएगा, क्योंकि देखो ना DQC, you can see this triangle DQC. If you are writing angle 5 as 90, so similarly you can write here, you can write, if I am writing angle 5 equal to 90, I will write similarly which one, angle 7. I'll name this one as angle 7. I'll name, yes, this one I'll name angle 7, so it will be angle 7 will also be equal to 90. angle 7 भी 90 आएगा, ठीक है. एंगल 6 हमने 90 प्रूव किया है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angle you can see. So that means what, we are having angle 6 as 90, angle 7 as 90. Now similarly we can write angle 8 as 90, this one भी, ये भी 90 बनेगा, this one also become 90, है ना. all the angles, and in which figure all the angles are 90. कौन सी ऐसी फिगर होती है जिसमें सारे एंगल्स 90 होते हैं? if angle Square and rectangles. हाँ, square and rectangle. Okay, square and rectangle are the two figures which are having all the angles as 90, जिसमें सारे एंगल 90 होते हैं. But here we are going to take that PQRS is a rectangle, because see we have not proved any side as equal. हमने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि सारी साइड इक्वल हैं, बस हमने एंगल्स 90 दिखाया. We have only shown, so that means what, we can write PQRS is a rectangle. Okay, why? Because all the angles we are given with, because all angles are 90 डिग्री. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, दैट्स वाई PQRS इज अ रेक्टेंगल, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. यही हम लोगों को प्रूव भी करना था. I hope it is clear.